हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एग्जामिन द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. A is if both the statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B is if both the statements are true but the statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C is if statement 1 is true and statement 2 is false. D is if statement 1 is false and statement 2 is true. Statements are for fluoride structure. F ions occupy the tetrahedral void and calcium 2 plus ions in CCP. Statement 2 is the radius ratio of fluoride structure is 0.414. So in this question we have to tell the statement 1 in which fluoride structure F ions occupy the tetrahedral void and Ca2 plus ions in CCP. It is correct or not? In statement 2 the radius ratio of fluoride structure 0.414. Is it correct or not? So now let's solve this question. So according to the statement 1, fluoride structure, or we can say that CaF2. In this structure, Ca2 plus ions occupied the CCP lattice, means cubic centered packed. Okay, and fluorine ions occupied all the tetrahedral voids. So that means हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें भी ये क्या बोल रहा है कि जो फ्लोरीन आयंस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी ये करेक्ट है, और Ca2 प्लस आयन हो रहे हैं CCP पे, तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है. अब हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं. द रेडियस रेशियो ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज 0.414. So let's check. Radius क्या होता है? Radius of smaller ion divided by radius of larger ion, or we can say that radius of cations divided by radius of anions. cations का रेडियस क्या होगा? 147 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय एनाइन का 231 पिकोमीटर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 0.636. ओके, सो इसका रेडियस रेशियो क्या हो गया? 0.636. और यहाँ क्या बोल रहा है कि रेडियस रेशियो ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज 0.414. So this is the wrong statement. Now let's see the options. So here in option A, if the both statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1, it is wrong because our statement 2 is the wrong statement. Next, B, if the both statements are true but statement 2 is not correct explanation of statement 1, so it is also the wrong because our statement 2 ही गलत है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का तो मैटर ही नहीं होता.
Then option C, if statement 1 is true and statement 2 is false. So this is the correct answer for this question, option C. Hope you all understand the solution of this question. Thank you.